we were doing this question. X plus 1 whole square plus y plus 4 whole square is equal to 17. 17 will become under root 17 whole square, under root and square are cancelled. So this will become x plus 1 whole square by y plus 4 whole square equal to 17. Now use the formula a plus b whole square for x plus 1 whole square. It will become x square plus 2x plus 1. In the same way, we will use a plus b whole square for the y plus 4 whole square. It will become y square plus 8y plus 16. 17 is shifted on the left side, it will become minus 17. So the answer will become x is will write in order x square plus y square plus 2x plus 8y plus 1 plus 16 minus 17 will be 0. Plus 1 plus 16 will be 17. 17 minus 17 will be 0, equal to 0. This is the answer. X square plus y square plus 2x plus 8y is equal to 0. Muhammad Salman. Okay, Muhammad Salman. Admitted. Shahryar Asghar. Shoaib Siddiqui. M. Akram. Jamshed Khan. P95. Osama. One, 2, 3, 8, 7. Abdullah Shah. Okay. So that was the question. Now we'll do another question of the same type. We will form the equation. Question number 9. End of diameter at -2, -6
and 1 comma 4 5 minus 2 comma minus 6 and 1 comma 5. These are the two end points of the diameter. These are the two end points of the diameter. This is question number 9. Sim Rizwan. 6. End of the diameter. Question number 9. Ends of the diameter. They are minus 2 minus 6 and 1 comma 5. These are the ends of the diameter. Asim Rizwan. Awais Dad Khan. Convey the message to Awais Dad Khan. He must write the ID. Camera is okay. Camera is okay. Okay, so this is the diagram. Sir, This is the center. And these are the sir, endpoints. This is 1 comma 5 sir, and this is minus 2 comma minus 6. Minus 2 comma minus 6. sir.
is it better, I think. Okay, so these are the endpoints of the diameter. The diameter is a line which is passing through the center. Diameter is a line which is passing through the center. So this line is passing through the center. And these are the endpoints, -2, -6, and 1, 5. So we will find the center. Center will be the midpoint. Center will be the midpoint. Center, we will find the center. First, we will find center by using midpoint formula. Solution. First, we will calculate center by using midpoint formula. What is the midpoint formula? Always Khan. Always Khan. Okay. What is the midpoint formula? Midpoint. X1 plus X2 upon 2. Y1 plus Y2 upon 2. We will add the both coordinates of X. We will add both end coordinates of the X upon 2 plus sum of the Y coordinates of the ends divided by 2. That will the midpoint. This is the midpoint formula. So center will be the midpoint of these two endpoints. Center is the midpoint of the diameter. Center is the midpoint of the diameter. G.
Okay. So we'll use this formula to find the center. Center is the midpoint of these 2 points. Center is the midpoint. Center always be at the middle of the 2 points. So center will be minus 2 plus 1 upon 2, comma, minus 6 minus 5, minus 6 plus 5. We have to add both. We will add both the coordinates. They may be negative or they may be positive. So center will become minus 2 plus 1 will be minus 1 upon 2. Minus 6 plus 5 will be minus 1 upon 2. These are the center coordinates. So we found the center. Now the second thing, we will find the radius. How to find the radius? We will use the distance formula. First we find the diameter, and radius will be the half of the diameter. So first we'll find distance, the radius, sorry, diameter by using the distance formula, under root minus 2 minus 1 whole square plus minus 6 minus 5 whole square. It will become minus 3 whole square plus minus 6 minus 5 will be minus 11 whole square. This is the diameter between these 2 points. The distance between the end points of the diameter is the diameter. So diameter is equal to under root minus 3 square will be 9 and minus 11 square will be 121. The answer is under root 130. The answer is under root 130. Now we will find the radius. Radius is half of the diameter. R is equal to diameter upon 2. This is the diameter from here up to here. So radius is half of this one or this one. These are the two radii. Half of the diameter. Therefore, R is equal to under root 130 upon 2. Under root 130 upon 2. This is the radius. So we found the center minus 1 upon 2, comma minus 1 upon 2. We found the radius under root 130 upon 2. By using these two, we can calculate, we can form the equation of the circle. We will form the equation of the circle. So I am rubbing this one. I am rubbing this. जी कुछ कह रहे हैं बेटा? सर 1 मिनट रुक जाए. अच्छा.
Okay. So equation of the circle. Equation of the circle. X minus the x coordinate of the center. This is center. Minus 1 upon 2 whole square plus y minus the y coordinate of the center minus 1 upon 2 whole square is equal to the square of the radius under root 130 upon 2 whole square. Now this is x plus 1 over 2 whole square plus y plus 1 over 2 whole square is equal to अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर वाले में तो 130 बचा और नीचे वाले में 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ऊपर वाले में अंडर रूट है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे अंडर रूट नहीं है 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, दैट विल बिकम 4। वो मैं मानना सी एंड मोहम्मद उजैर है। Okay. Now we will open it by using a plus b whole square. Here also a plus b whole square. It will become x square plus x. 2 times 2 into x into 1 upon 2. 2 into x into 1 upon 2. 2 से x 1 over 2 कैंसिल हुआ, सिर्फ x बच जाएगा. And plus square of 1 over 2 will be 1 over 4. इसको भी ओपन करेंगे y square plus 2 times of y into 1 over 2. So 2y into 1 over 2 will be y plus 1 over 4 is equal to 130. और 130 अपॉन 4 को इस तरफ ले ले, माइनस 130 अपॉन 4 इक्वल टू 0। क्या मसला है, अगेन और अगेन ये ऑफलाइन हो रहा है। ये 130/4 को सिंपलीफाई नहीं कर? नहीं जी, अभी देखिए इसको आखिर में सिंपलीफाई करते हैं, अरेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 over 4 plus 1 over 4 minus 1 over 30, 130 over 4 equal to 0। आप ये देख लें, 1 over 4 plus 1 over 4 will be 2 over 4। It will become x square plus y square plus x plus y। 1 over 4 plus 1 over 4 will be 2 over 4 minus 130 over 4 will be minus 128 over 4 is equal to 0। 1 plus 1 will be 2 over 4, नीचे एक जैसे सबके एक ही एलसीएम में 4 ही आएगा, एलसीएम सबका क्या आएगा 4 आएगा क्योंकि सबके नीचे 4 है, तो ये 1 plus 1 minus 130 हो जाएगा ऊपर। So 1 plus 1 will be 2, 2 minus 130 will be minus 128 upon 4। 4 1s are 4, 4 3s are 4 2s are। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई
-32 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई सर्किल की, which has the end points of the diameter -2, -6 and 1, 5. These are the end points of the diameter of the circle. These are the end points of the diameter of the circle, -2, -6 and 1, 5. तो सबसे पहले हमने सेंटर निकाला, तो by using the midpoint formula that will become -1/2, -1/2. फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए इसका रेडियस निकाला, दैट विल बिकम √130, और उसका फिर हाफ ले लिया। रेडियस क्या होगा, हाफ होगा, तो √130/2 हो गया रेडियस। फिर सेंटर और रेडियस यूज करते हुए हमने ये इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन बनाई। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, x² + y² + x + y - 32 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने पढ़ा है कि जब हमें सेंटर और रेडियस दिया जाए तो इक्वेशन कैसे बनानी है। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन दी जाए तो हम उसे सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। अब क्या है, इक्वेशन दी जाए तो उसे सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, तो ये हमने करना है। इक्वेशन दी जाएगी, हमें सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है, अब वो करेंगे हम। यही एक्सरसाइज है। इसी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज मैंने आपको भेज दी है, व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है एक्सरसाइज। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको आउट कर दूं क्या, रिमूव कर दूं मैं? Now, how to find the equation, how to find the center and radius when the equation is given? How to find the center and radius when the equation is given? वालेकुम। बेटा तुम्हें मैं आउट ही कर रहा हूं, तुम्हारा हल यही है कि तुम्हें मैं आउट कर दूं। जी, तुम्हें मैं आउट कर रहा हूं बेटा। ओके,
how to find center and radius when the equation is given. तो इक्वेशन हमारे पास सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लाना होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कैसी होगी, इस किस्म की होगी. स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट करना होगा.